Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the income tax updated return ITR-U. CBDT recently enabled filing of ITR-U on income tax e-filing portal for assessment year 2021 and also for the assessment year 21-22 using the Excel utility for ITR-1 to ITR-7. So before that, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So regarding this ITR-U, we have already prepared 2-3 videos on ITR-U, and recently CBDT enabled filing of ITR-U on income tax e-filing portal for assessment year 2021 and assessment year 21-22 using the Excel utility for ITR-1 to ITR-7. Means all forms ITR-1 to ITR-7 now they are enabled on the income tax e-filing portal. You can file the updated ITR-U जो भी corresponding आपका form है ITR-1 to ITR-7 whatever it may be, you can do it. So first let's discuss what's the updated return. Updated return in this Union Budget 2022, Finance Minister Nirmala Sitharaman ji had introduced this new concept updated return. पहले अभी तक क्या था? Original return under section 139(1), then belated return, then revised return. But this new concept, like if you have missed to file either original return or the belated return or the revised return, or if you have filed and there are some omission, some rectification, then you can file this updated return, and this updated return you can file within 24 months from the end of relevant assessment year. This new section 139 subsection 8 caps A, this was introduced in Union Budget 2022, and then later on 29th April 2022, CBDT wide notification number 48, they have also notified Rule 12AC and also the form for this updated return, which is ITR-U. They have notified. इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो we have already uploaded on the YouTube channel of CA Sansaar. You can check it from the CA Sansaar YouTube channel. Otherwise, we will also give you the link in the I box, comment box में भी दे देंगे. So this was the notification on 29th April regarding the Rule 12AC and Form ITR-U. 12AC is basically for the updated return. In this updated return of income, they have said कि आप कब से commence कर सकते हो, from which assessment year, like assessment year 2021 onwards, you can file this updated return. And they have also notified Form ITR-U. Form ITR-U, and then they said कि how in Rule 2, they said कि how you can, the person who have furnished the return under subsection 1, in which manners they can furnish return of income electronically under digital signature. All this we have already discussed. इसके ऊपर 12AC rules के ऊपर हमने already सारा complete discussion किया है. But let me again tell you who can file updated return. अभी भी काफी confusion है. Many messages we are getting. So updated return, who can file? Any taxpayer, means कोई भी taxpayer who have missed to file ITR. अगर आपने ITR फाइल नहीं करी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जिसका असेसमेंट ईयर 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर उसके बाद भी 2021 एंड assessment year 21-22, can file ITR-U by paying additional tax. Two cases are there. First, कि आपने ITR फाइल ही नहीं करी. सेकंड केस, आपने ITR फाइल करी बट यू फॉरगेट कि यू हैव सम ओमिशन, कि आप कोई income omission or some mistakes are there, तो you don't have the time for the belated or the revised return के लिए भी time नहीं है, then you can go through the updated return by paying additional tax.
सो इन दिस टू केसेस, तो इसको अगर हम डिटेल में देखें कि हु कैन फाइल एन अपडेटेड आईटीआर। सो अगर आपने प्रीवियसली रिटर्न फाइल ही नहीं करी, अगर फॉर दिस असेसमेंट ईयर, जो लास्ट टू असेसमेंट ईयर से दे हैव कमेंस असेसमेंट ईयर 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22, इन दो असेसमेंट ईयर से अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, नाउ यू कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। सेकंड केस, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, इफ देयर आर सम ओमिशन, कि आप कोई इनकम उसमें शो करना भूल गए, देन आल्सो यू कैन फाइल दिस अपडेटेड रिटर्न। देन सम रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन, उसमें कुछ डिफरेंस है। देन रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, कि आपने टैक्स रेट्स कुछ लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के 20% है, यू चार्ज 10% है, समथिंग लाइक दैट, कुछ मिस्टेक्स है, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स। देन रिडक्शन ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, then also you can file the updated return. Then reduction of carry forward losses, then reduction of टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115JB एंड 115JC, जो मैट का टैक्स क्रेडिट है उसके, इन दीज केसेस यू कैन ओनली फाइल द अपडेटेड रिटर्न। नाउ अपडेटेड रिटर्न फाइल करोगे तो व्हाट्स द टाइम लिमिट, कितने टाइम लिमिट में आपको अपडेटेड रिटर्न जो फाइल करनी है, जो ITR-U फॉर्म है, जो उसमें अनेक्स होगा एडिशनली, तो यू कैन फाइल विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो 24 मंथ के अंदर, लाइक फॉर एग्जांपल आपका असेसमेंट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 1920 है, असेसमेंट ईयर 2021 जो 31 मार्च 21 को कंप्लीट होगा, तो इन दिस केस 24 मंथ कैन बी फाइल्ड अप टू 31 मार्च 2023। एंड फॉर ITR फॉर 2021 फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर 2021 को 21-22 को यू कैन फाइल अप टू 31 मार्च 24। तो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न, कि आप अपडेटेड रिटर्न इन दीज टू फाइनेंशियल ईयर, टू असेसमेंट ईयर की आप फाइल कर सकते हो विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर जब एंड हो रहा है उसके विद इन 24 मंथ्स। तो दिस इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न। देन एडिशनल टैक्स पेमेंट, आपको ITR अपडेटेड ITR फाइल करनी है तो यू हैव टू पे सम एडिशनल टैक्स। So you have to pay additional tax. How much is the additional tax? So in this case, अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हो विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ 12 रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, अगर विद इन 12 मंथ फाइल कर रहे हो, देन यू हैव टू पे एडिशनल 25% इंटरेस्ट ऑन द टैक्स ड्यू। जो आपका टैक्स ड्यू है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, उसका 25% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड इफ यू हैव फाइल्ड, अगर आप फाइल कर रहे हो आफ्टर 12 मंथ्स and within 24 months, within 24 months is the maximum time, so in this case you have to pay additional 50% interest on the tax due. So for this assessment year 21-22, तो 12 month तो complete हो गए, तो now you can file by paying 50 sorry, for assessment year 2021 जो financial year 1920 है, in this case 12 months is completed. Now you can file up to 31st March 23, only about 12 months and up to 24 months, so you have to pay additional 50% interest on the tax due. But yes, for this assessment year 2021 you can pay 25% additional tax. So अगर 12 months में फाइल कर देते हो, 12 months के बाद फाइल करते हो तो 50% additional tax. So additional tax कैसे कैलकुलेट करना है, दिस इज आल्सो मेंशन इनटू द ITR-U। ITR-U में मैं आपको जो फॉर्म है उसमें अभी आपको शो करता हूँ। तो उस केस में एडिशनल टैक्स जो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, फर्स्ट यू हैव टू चेक टैक्स पेबल। जो आप मॉडिफाई ITR जो अपडेटेड ITR फाइल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली व्हाट्स द टैक्स पेबल, व्हाट्स द टोटल इनकम जो आपने अपग्रेड करी है अपने इनकम, एंड व्हाट्स द टैक्स पेबल, एंड देन इंटरेस्ट जो आपका 234A, B, C जो एडिशनल इनकम टैक्स इनकम आपने शो करी है उसके ऊपर हाउ मच इज द इंटरेस्ट लेविड, देन व्हाट इज द लेट फीस, जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234F में लेट फीस है उसको ऐड करो। देन इफ देयर आर ऑलरेडी टैक्स, आपने कोई टैक्स TTS, TCS या कोई एडवांस टैक्स या कोई रेगुलर असेसमेंट टैक्स पे किए उसको आप उसमें लेस कर देंगे। देन टोटल रिफंड इशूड, जो आप टोटल रिफंड इशूड करोगे इन द ओरिजिनल रिटर्न। देन एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटीज, जो आपकी एग्रीगेट टैक्स लायबिलिटी विल बी A + B + C + E
माइनस डी, जो ऑलरेडी आपने टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, एडवांस टैक्स, टीडीएस, रेगुलर असेसमेंट, दैट विल बी डिडक्टेड। एंड ऑन दिस अमाउंट, जो ये अमाउंट होगा आपका एग्रीगेट टैक्स लाइबिलिटीज, उसके ऊपर यू हैव टू चेक द एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी, वेदर इट्स द 25% और द 50%। करेक्ट इट, कि आपका कितना टैक्स पेबल है, देन व्हाट्स द इंटरेस्ट, व्हाट्स द लेट फीस, अगर कोई ऑलरेडी टैक्सेस पेड कर रहे हैं उसको लेस कर दिए, या कोई रिफंड इश्यू कर दिया आपको ऑलरेडी फ्रॉम द बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिटर्न, उसके बेसिस पे भी आप उसको ऐड कर लेंगे। एंड देन वी विल चेक द टैक्स लाइबिलिटीज, एंड देन total amount aggregate tax liability plus the additional tax that will be payable for ITR-U. This is mentioned in your ITR-U. ITR-U में आपका क्लियरली मेंशन है कितना एडिशनल टैक्स है, कि आपके अमाउंट पेबल, देन अमाउंट रिफंडेबल कोई करा है तो उसके बेसिस पे दिस इज ऑलरेडी मेंशन इनटू द एडिशनल टैक्स अमाउंट इनटू द ITR-U। देन आपको कुछ डिटेल्स भी देनी है ITR-U में पूरा। अगेन आई एम सेइंग ऑन दैट फॉर्म वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, आप उसको चेक कर सकते हैं, पूरा ITR-U फॉर्म्स के ऊपर है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू अपलोड ITR-U along with the corresponding जो आपका एप्लीकेबल ITR फॉर्म है, ITR-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है आपका, उसके साथ आपको ITR-U भी अपलोड करना है। एंड देन उसमें यू हैव टू मेंशन सम रीजन, कि आपको रीजन देने हैं कि व्हाई यू आर फाइलिंग दिस अपडेटेड रिटर्न। सो दिस इज द ITR-U, उसमें आपके रीजन है कि आपको क्या रीजन देना है, कि रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल, अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, या फिर इनकम नोट करेक्टली रिपोर्टेड करेक्टली, wrong head of income chosen, reduction of carry forward losses, reduction of unabsorbed depreciation, reduction of tax credit under section 150, 115JB, 115JC, wrong date of tax, others। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पीछे। और यू हैव टू मेंशन द रीजंस, आपको रीजन भी बताना है कि व्हाई यू आर फाइलिंग दिस अपडेटेड रिटर्न। एंड देन हु कैन नॉट फाइल द अपडेटेड रिटर्न। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि एनीबॉडी कैन फाइल द अपडेटेड रिटर्न। देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो जो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट उसमें सेक्शन 139(8)A में भी मेंशन है, फर्स्ट इफ देयर आर नो एडिशनल टैक्स आउटगो, अगर आपकी अपडेटेड रिटर्न में कोई एडिशनल टैक्स नहीं आ रहा, देन यू कैन नॉट फाइल द ITR अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न। देन अगर रिफंड है, मीन्स कि कोई पीछे आपका TDS है और आपने रिफंड क्लेम नहीं करा, नाउ इफ यू थिंक आई कैन डू थ्रू द अपडेटेड रिटर्न, नो, यू कैन नॉट डू इट। रिफंड या फिर इंक्रीज इन द रिफंड अमाउंट, कि पहले आपने कुछ और रिफंड क्लेम किया था, नाउ थ्रू अपडेटेड रिटर्न यू आर क्लेमिंग मोर रिफंड, नो, you cannot do it। Then third case, in case search or survey or prosecution proceedings are initiated, अगर ये proceeding initiate हो गई है, then also you cannot file the updated return। And then assessment, reassessment, revision, recomputation is completed or pending, then also you cannot file this अपडेटेड रिटर्न। सो दीज आर द केसेस, अगर उसको हम एग्जांपल के थ्रू ले, हु कैन नॉट फाइल एन अपडेटेड रिटर्न। फर्स्ट, लॉस रिटर्न, आप लॉस रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, अपडेटेड लॉस अपडेटेड रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। नील रिटर्न, अगर बाई चांस आपने कोई पहले रिटर्न मिस कर गए, रिटर्न फाइल करना फॉर दिस असेसमेंट ईयर, जो अभी 2 असेसमेंट ईयर की हम बात कर रहे हैं, 2021, 21, 22, अगर आपने मिस कर दी तो नाउ यू वांट टू फाइल द नील रिटर्न, सॉरी यू कैन नॉट फाइल। लॉस रिटर्न, सॉरी यू कैन नॉट फाइल। इन केस ऑफ रिफंड, अगर आप रिफंड क्लेम कर रहे हो या फिर इंक्रीज इन द रिफंड, देन आल्सो सॉरी यू कैन नॉट डू। इफ द टोटल टैक्स लायबिलिटी इज टू बी रिड्यूस्ड, कि पहले आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ थी, नाउ इट्स गोइंग टू रिड्यूस। फॉर एग्जांपल, अर्लियर टैक्स लायबिलिटी वाज 1 लाख, नाउ यू आर सेइंग थ्रू द अपडेटेड रिटर्न इज 50,000, नो, यू कैन नॉट डू इट। आप मीन्स उसका रिफंड भी नहीं क्लेम कर सकते, टैक्स लाइबिलिटीज को भी रिड्यूस नहीं कर सकते। देन लॉसेस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द इनकम, कि कोई लॉसेस थे वो पीछे मिस हो गए थे, इनकम से एडजस्ट करना, दैट यू कैन नॉट डू। देन सर्च, सर्वे, प्रोसीडिंग, prosecution proceeding are initiated for the assessment year, then also you cannot file the updated return। Then assessment, reassessment, revision is pending or completed for that assessment year, in that case also you cannot file the updated return। So this is regarding the updated income tax return which has been enabled by the CBDT
recently. So in case if you have any query, any question, you can message or you can mail me. But only request, once again I am saying, please ओनली ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, जो आपका एक नॉर्मल रूटीन लाइफ है, ऐसा नहीं कि आपको 2 बजे मैसेज कर दो. एंड ऑल्सो प्लीज मैसेज योर डिटेल्स. आप अपना नेम, एड्रेस, फोन नेम, प्लीज जरूर बता दीजिए. समटाइम पीपल आर ओनली सेंडिंग मैसेज, तो ऐसे नहीं है. एटलीस्ट वेन एवर यू आर गोइंग टू सेंड मैसेज टू समवन, आप अपना एक इंट्रो तो जरूर दीजिए. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. बाय बाय, टेक केयर.